Hello everyone. In today's topic, we will discuss landscape of the soul. The chapter is not only an illustration of two different art forms, but it is also a journey of the development, journey and the development of art forms in different region of our world. Okay, students, the chapter has clearly mentioned. The difference between Chinese art forms, okay, and the European art form, okay. In this chapter, the writer has also tried to mention uh, another art form that is known as outsider art, okay. Clear, students? Before teaching you, can you give me an answer? Have you ever visited Chandigarh? Probably your answer would be yes. If yes, you know Chandigarh is famous for its garden, that is rock garden. Okay, in a rock garden, an art form has been used. Okay, that will be discussed later in this chapter. Okay, clear, students. An artist can change or transform an ordinary thing into an extraordinary things. Okay, here is something that is called the aesthetic sensibility, and something that can even make its spectators feel good and sense the beauty of the art. Okay, clear. And with his brush, a painter can even paint uh, a, can paint something that can even leads to an illusion to be a living thing. Okay, for example, nowadays 3D paintings are on the rise. Okay, 3D paintings are quite in trends. Okay, and people sometimes stand awestruck, or sometimes they stand surprised when they see any 3D painting. Okay, clear. And this sometimes make them have disillusion. Okay, उनको वहम भी हो जाता है. So such are the art forms that we will discuss in this chapter. Okay, but before that, let us have the introduction of it. Okay, written this chapter is written has been written by Nathalie Troy. Okay, the chapter is about how different the Chinese art form is from the European art form. Okay, the writer uses two stories to make a contrast. Okay, दो stories की वो बात करेगा. Okay, European art is about reproducing an actual view, whereas Chinese art form is about not creating a real landscape. Okay, तो यही है कि जो यूरोपियन आर्ट फॉर्म है ना, ये आपको बताएगी कि भाई कैसे चीज़ों को रिप्रोड्यूस किया जाता है टू एन एक्चुअल व्यू, कि बिल्कुल वो इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस उसके अंदर हो, बिल्कुल वो वैसी दिखाई देती है जैसी वो एक्चुअल में होती है. एंड इन चाइनीज आर्ट फॉर्म इज नॉट क्रिएटिंग अ रियल लैंडस्केप, इट नेवर क्रिएट अ real landscape. Okay, European art is an artist's way to let viewers show exactly what he wants them to see in the landscape. European art form जो होते हैं ना, it makes their viewers to show uh, uh, to see exactly what the painter wants them to see. वो क्या दिखाना चाहता है वही उसको देखना होता है. Okay, and Chinese art, in Chinese art, the artist's spiritual and inner voice, where you can travel any point, and it lets the viewer create a path for their own imagination. And in Chinese art form, जो spectator or viewer जो होता है ना, he will choose the way to enter in a painting, and he will create his own paths for his own imagination. अपनी imagination से वो सोच सकता है कि what the painting actually represents. Okay, clear. Before going ahead, let me tell you the meanings of the expressions given in the book. Okay, the first expression is anecdote. Okay, illusionistic likeness, delicate realism, conceptual space, figurative painting. Okay, so anecdote, what is anecdote?
Anecdote from the text, the meaning of the anecdote can be inferred as a short account of a particular incident or event, especially of an interesting and exciting nature. मतलब it's a small story, you can say small account of particular thing, इसको anecdote बोलते हैं. Next one is delicate realism. It refers to the alluring quality. Alluring means tempting quality, attracting quality of the art, which makes it real. It seem which makes it seem real, जो इसको बिल्कुल रियल उसको शो करती है. It is an interest in or concern for the actual or real as opposed to abstract. Okay, as opposed to abstract, वो उसको एक्चुअल उसमें कर सकती है. ठीक है, क्लियर. इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस मतलब वो बिल्कुल रियल दिखाई देती है इसमें डेलिकेट रियलिज्म में. ठीक है. Illusionistic likeness, it refers to an adjective of the technique of using pictorial method in order to deceive the eyes. Means ये जो ना, it is an illusionistic likeness, the appearance will be illusionistic. Okay, बिल्कुल वहम पैदा कर देगी. It seems to deceive the eye. Okay, the reference is to an illusion created by the resemblance of समथिंग. किसी चीज़ की रिजेम्बलेंस होती है, लगता है कि ये चीज़ वो है, बट इट इज़ नॉट सो. ओके. फिगरेटिव पेंटिंग. फिगरेटिव पेंटिंग रेफर्स टू द मेटाफोरिक representation of a piece of art. Okay, clear. Through the eyes of the creator's imagination. Okay, figurative painting जो है ना, एक piece of art होती है, and that could be interpreted with the creator's imagination. आपको क्रिएटर की इमेजिनेशन से ही उसका पता चलेगा. ओके. कंसेप्चुअल स्पेस. इट रेफर्स टू द टू रिलेशन विद एब्स्ट्रैक्ट देन द फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन. इसका ये रेफर करती है उस रिलेशन के बीच जो एब्स्ट्रैक्शन होता है फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन के बीच में. ओके. और इट इज़ this is the incalculable dimension of the understanding of concepts. कंसेप्ट की एक इनकैलकुलेबल समथिंग दैट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, जिसको आप गिन नहीं सकते ना. इस तरह की डायमेंशंस को, मतलब मल्टीपल जो डायमेंशंस हैं ना, उनकी अंडरस्टैंडिंग की बात करता है कंसेप्चुअल स्पेस. ओके. एंड रेस्ट विल बी क्लियर्ड एज सुन एज वी स्टार्ट रीडिंग दिस. ओके. Let us read the first para of this chapter. Okay. A wonderful old tale is told about the painter Wu Daoji, who lived in the 8th century. His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Zhuangzong, okay, to decorate the palace wall. The master had hidden his work behind a screen, so only the emperor would see it. Okay. For a long while, the emperor admired the wonderful scene, discovering forests, high mountain, waterfall, clouds floating in an immense sky, man on hilly paths, okay, birds in flights. Look, Shire, said the painter, in this cave, at the foot of the mountain, dwells a spirit. The painter clapped his hands like this, and this entrance and the entrance of the cave opened. The inside is splendid beyond anything words can convey. Please let me show you your way, majesty. The painter entered the cave, but the entrance closed behind him, and before the astonished emperor could move or utter a word, the painting had vanished from the wall. Not a trace of Wu Daoji's brush was left, and the artist was never seen again in this world. Okay, clear? Students, it is really a wonderful tale uh, about a painter named Wu Daoji,
who lived in 18th century. He was assigned century was assigned to decorate a palace wall by the Tang Emperor Zhuangzong. Okay, it was his last painting. The painter hid his work behind the screen, so the only emperor would see it. Okay, उसने पर्दे से उसको ढक दिया ताकि वो ही देख सके. The emperor, upon looking at the painting, admired many things into that painting, like discovering forests, high mountains, waterfall, floating clouds, man on hilly paths, birds in the flight. Okay, and the painter then made him out of the out made him look at a cave in the painting, which was at the foot of the mountain, and compared it with a living spirit. The painter, as a painter clapped his hand, the entrance of the cave opened, and he let the emperor know how beautiful the inside of the cave was, and he asked him to show all this to him. The painter entered the cave and entered and the entrance closed behind. Okay, the emperor could not enter the cave, as the emperor was greatly surprised. The painting vanished from the wall. After that, the painter was never seen again. Okay, students, let me tell you the Hindi translation of this paragraph. Okay, clear? स्टूडेंट्स, एक पेंटर है जिसका नाम है वू दाओ जी, जो 8th सेंचुरी में रहता था. ओके, एंड उसके बारे में एक पुरानी कहानी है कि भाई उसने अपना एक लास्ट जो चित्र था ना, जो पेंटिंग थी, उसका एक लैंडस्केप उसने बनाई. लैंडस्केप क्या होती है? एक वाइड सीनरी होती है कंप्राइजिंग माउंटेन, वाटरफॉल एंड सी, बर्ड, ईच एंड एवरीथिंग उसने इंक्लूड की. ओके, और किसके कहने बनाई थी? तांग सम्राट जो जुआंग जोंग ने महल में एक दीवार सजाने के लिए उसको कहा था बनाने के लिए. तो उसने अपनी जो पेंटिंग है उसको पर्दे के पीछे छुपा के रखा ताकि केवल सम्राट इसको देख सके. जब एम्प्रर बहुत समय तक इस सम्राट जो था ना, इसके वनों की और इसकी ऊंचे ऊंचे झरनों की, माउंटेन्स की और फाउंटेन वगैरह इनकी अप्रिसिएशन करता रहा. ठीक है, आकाश में तैरते बादल की, पहाड़ों पर बने जो ट्रैक्स, चलते हुए लोग, है ना, एंड फ्लाइंग बर्ड्स इन द स्काई, इन सब की वो करता रहा. देन द पेंटर रिप्लाई टोल्ड हिम एंड इनवाइटेड हिज लुक कि सर देखो, पहाड़ की तलहटी में देखो, इस गुफा में एक आत्मा रहती है. देयर लिव्ड अ स्पिरिट इन द माउंटेन, ड्वेल अ स्पिरिट एट द फुट ऑफ द माउंटेन, ऐसा उसने कहा. एंड देन उसने ताली बजाई. ताली बजाते ही गुफा का दरवाज़ा खुल गया. ओके, एंड वो बोला जी, फिर क्या कहता है कि देन ही टोल्ड द महाराजा दैट ही वुड शो हिम द वे. बोलो चलो मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ. ओके, एंड फिर ही एंटर द केव, उस गुफा में प्रवेश कर गया. और बट इससे पहले कि राजा कुछ कर पाता, हिलता भी उससे पहले ही द केव वॉज क्लोज्ड. वो केव जो थी ना गुफा, वो बंद हो गई. ठीक है, और उसके बाद वो दाऊ जी के ब्रश का कोई निशान उस क्या बोलते हैं, दीवार पर या उस कैनवास पर बचा ही नहीं. पेंटिंग भी गायब हो गई और वो दाऊ जी भी गायब हो गया. इट वॉज जस्ट यू कैन से अनेक्डोट, एक कहानी है, एक छोटा सा अकाउंट है आर्ट फॉर्म का, चाइनीज़ आर्ट फॉर्म का. ओके, आई थिंक नाउ इट इज़ क्वाइट क्लियर. Okay, students. Such stories played an important part in China's classical education. The books of Confucius and Zhuangzi are full of them. Okay, Confucius की और Zhuangzi की जो books है ना, they are full of such kind of stories. Okay, they helped the master to guide the disciple in the right direction. Okay, जो जो उनका जो प्यूपिल होता है ना, उसको, चेला जो होता है उसको वो सही मार्ग दिखाने में मदद करते हैं इन कहानियों की मदद से. बियॉन्ड द एनेक्डोट
they are deeply revealing of the spirit in which art was considered. लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें ना, इसके इस कहानी की से हटकर हम कोई बात करें, तो इसमें एक डीप फीलिंग हैज़ बीन एक्सप्लेन कि there is another story of a guide of a of a famous painter. Okay, clear. वो क्या कहता है कि there is another story of famous one about a painter who wouldn't draw the eye of a dragon he had painted for fear it would fly out of the painting. And with an old story from my native Flanders that I found most representative of Western painting. वो कहता है कि there is another famous story, such story regarding a famous painter who once painted a dragon on a canvas, but he afraid of making its eye in fear of that if in fear he was afraid of if he somehow made the eye of the dragon, it would fly, okay, away from the painting. वो उड़ जाएगा, it will be मतलब alive, जिंदा हो जाएगा. तो ऐसी कोई स्टोरी फ्लैंडर्स ने उसको सुनाई है, जो कि ठीक है. एंड फ्लैंडर हु फ्लैंडर इज एन native, or you can say the citizen of that the country, who is considered as the representative, प्रतिनिधि को के रूप में उसको रखा है of the western painting. Okay, clear. तो let's have its English explanation. These stories played an important role in classical education in China. Similarly, like the book of Confucius and Zhuangzi, are full of such stories as they help the master to help and guide his followers in his right direction. These stories were considered to be deeply revealing of the spirit, just like the art. Okay, there was another famous story. इन कंट्रास्ट टू द प्रीवियस वन, इसके साथ साथ एक और स्टोरी है कि वेयर द पेंटर वुडंट पेंट द आई ऑफ ड्रैगन, ड्रैगन की आँख नहीं बनाता है. ही फियर्ड दैट ड्रैगन वुड फ्लाई आउट फ्रॉम द पेंटिंग. ओके, it was one of the stories from the many others which came from the medieval country in Western Europe. Okay students, clear. तो ऐसा ही कुछ है कि एक देशवाजी फ्लैंडर्स एक पुरानी कहानी बताता है, जो कहता है कि भाई एक चित्रकार ड्रैगन नहीं बनाता है, क्योंकि आँख बनाने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसको डरता है कि आँख बनाते ही इट विल फ्लाई अवे फ्रॉम द पेंटिंग. तो बताओ, ऐसी ऐसी पेंटिंग्स की बात यहाँ पे की है. ओके, let us read the next paragraph of this chapter. In 15th century Antwerp, a master blacksmith called Quinton Misties fell in love with a painter's daughter. Okay, एक in 15th century there was there was a painter, there was a skilled blacksmith, एक लोहार था. Okay, clear. And he was even a paint, and he fell in love with a पेंटर्स डॉटर. उसको है ना किसी पेंटर की बेटी से प्यार हो जाता है. सो द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन. सो द फादर इन लॉ एज इन such kind of love story happens, he is not agree to marry his daughter to a boy हु इज़ इन सच अ प्रोफेशन, जो ब्लैक स्मिथ हो उससे शादी करना नहीं चाहता था उसकी. सो क्विंटन स्नीक्ड इन टू द पेंटर्स स्टूडियो एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल. तो द क्विंटन जो ब्लैक स्मिथ था ना, ही एंटर्ड द रूम ऑफ दैट ऑफ दैट पेंटर्स के रूम में वो घुस जाता है. एंड
ही मेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल, उसके नए पर्दे पर एक फ्लाई, एक मक्खी का चित्र बना देता है. ओके, विद सच डेलिकेट रियलिज्म दैट द मास्टर ट्राइड टू स्वेट इट अवे बिफोर ही रियलाइज्ड what had happened, and he made it in with so much with utmost reality that it seems quite real, and even it looks so real that the painter tried to fly it away, इसको उड़ाने की कोशिश की इस मक्खी को उसने, and then he got understood that it was not a real one. Okay, Quentin was immediately admitted as an apprentice into his studio, और क्विंटन को फिर हाथ बिल्कुल ऑन दैट वेरी मोमेंट ही वॉज एडमिटेड एज द अप्रेंटिस एज अ लर्नर इन हिज स्टूडियो, उसके स्टूडियो में उसको एज ए लर्नर उसको उसने एडमिट कर लिया. ही he made his beloved and went on to become one of the most famous painters in the of his age, and then he he got a chance to marry with his beloved, अपनी प्रेमिका से शादी करने का मौका मिला उसको, and thereafter he became the most famous painter of his age. Okay, अपने युग का फेमस वो बना. ठीक है, these two stories illustrate what each of the art is trying to achieve: a perfect illusionistic likeness in Europe and the essence of inner life and spirit in Asia. So here with these two stories, with those two, which two stories, uh, stories of Wu Daoji and stories of Quentin Mestis. Okay, इन दोनों की कहानियों से क्या पता चलता है, द डिफरेंस बिटवीन द टू फॉर्म्स ऑफ आर्ट. ओके, ओके, एंड दीज आर्ट्स आर ट्राइंग टू अचीव अ परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस. उनमें से एक तो क्या अचीव करती है, परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस. इल्यूजनिस्टिक मीन्स बताया मैंने, पहले बता चुका मैं. ओके, एक बिल्कुल रिजेम्बलेंस, मतलब इल्यूजन दैट इज कोज्ड बाय द रिजेम्बलेंस. ओके, लाइकनेस ऑफ समथिंग, कोई एक जैसी चीज़ दिखने वाली उससे वहम पैदा हो जाए, इस तरह की चीज़. एंड यूरो एंड ये तो था यूरोपियन एप्टीट्यूड ऑफ आर्ट एंड द एसेंस ऑफ इनर लाइफ इन एंड स्पिरिट इन एशिया. और इनर द स्पिरिट है, स्पिरिट ऑफ पेंटिंग. ओके, द व्यू ऑफ नोइंग inner spirit of the painting. Okay, that is related to Asia. Okay, clear? Here the meanings have been given. Antwerp, a city of northern Belgium, बेल्जियम के उत्तरी जगह पर ये है. Okay, Antwerp. Delicate realism, the quality of art that makes it seems real. एक ऐसी क्वालिटी जिसको लगता है कि ये चीज़ रियल है. स्वेट होता है हिट और क्रश समथिंग. अप्रेंटिस होता है ट्रेनी और लर्नर. Okay, novice. Illusionistic likeness, an illusion created which resembles something. Okay, वो मक्खी वाला एग्जाम्पल. Okay, clear? So during the 15th century in Antwerp, a master blacksmith named Quentin Misties falls in love uh, with a painter's daughter. Since the father was not accepting their relationship because of his profession. Okay, the blacksmith sneaked into the painter's studio and painted a fly on his latest panel. Okay, on his canvas. The painting was so real that the master tried to hit the fly away before he realized that it was just a painting. The blacksmith was accepted into the studio as a trainee. He married the painter's daughter and later became one of the famous painters of his age. The two stories told above are trying to illustrate the form of art in two different religions. Okay, in Europe the art is perfect and like an illusion which resembles something. In Asia the art gives an essence of inner life and spirit. Okay students, clear? Students, let's read the last paragraph for today's
video. Okay, we'll complete the rest of the part in the next video. Okay, or in next part. In the Chinese story, the emperor commissions a painting and appreciates its outer appearance, okay? But the artist reveals him to true meaning of his work, okay? The emperor may rule over his territory he has conquered, but only the artist knows where the way within. Let me show the way, the thou, a word that means both the path or the method, okay? The mysterious works of the universe, okay? The painting is gone, but the artist has reached his goal beyond any material appearances, okay? Clear? Let's have its explanation. As in the Chinese story, the artist reveals the true meaning of his work to the emperor who rules over his territory but did not know the way within. जानता नहीं था कि भी कैसे अंदर जाए. The emperor the emperor only saw the outer appearance of the wall painting. Okay, the work was mysterious and thou, which means something which has both paths, is what the artist did. Okay, as the painting was gone after, okay, the artist reached the cave. The motive was fulfilled that some work is beyond material appearances. ओके, तो आपने क्या देखा कि जो चाइनीज़ जो स्टोरी थी ना, उस स्टोरी में जो एम्परर जो था वो एक पेंटिंग बनाने का आदेश देता है. ओके, एंड ही अप्रिशिएटेड इट्स आउटर अपीयरेंस, उसकी बाह्य जो रूप है उसकी बात करता है, प्रशंसा करता है. बट जो आर्टिस्ट जो था उसके सामने अपनी जो पेंटिंग है उसका सही जो मीनिंग है वो रिप्रेजेंट करता है. ओके, वो कहता है कि एक जो एम्परर है वो अपने उस एरिया और उस टेरिटरी का किंग हो सकता है जिस पर वो राज्य करता है, जिस पर वो रूल करता है. ओके, लेकिन अंदर का रास्ता तो एक कलाकार ही जानता है. ओके, क्लियर? मीन्स हाउ टू गेट इनसाइड द पेंटिंग इज़ द ओनली वे दैट अ पेंटर डज नो इट. केवल वही तो जानता है. ठीक है. दाओ, दाओ एक वर्ड है दैट मीन्स जिसमें होता है रास्ता या ढंग, और ब्रह्मांड के रहस्य भी. ओके, द सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स ऑल्सो. ठीक है. एंड व्हेन ही एंटर्ड द पेंटिंग इज लॉस्ट, पेंटिंग इज वेनिश्ड, पेंटिंग गायब हो जाती है. लेकिन जो पेंटर है उसका मोटिव, उसका जो ऑब्जेक्टिव है ना, इट गॉट क्लियर बिकॉज ही वांटेड टू कन्वे द आइडिया दैट सम वर्क इज़ बियॉन्ड मटीरियल अपीयरेंस. कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके सांसारिक जो सांसारिकता से बिल्कुल परे होती हैं, दूर होती हैं. ओके स्टूडेंट्स, so you are advised to study this chapter in your book. Okay, clear? We will complete this chapter in the next video. Okay students, okay, make your notes on this basis. Okay, and if you have any doubt you can ask me. Okay, clear? So thanks for watching this video beta. Stay safe. Okay, be at home. Okay, clear?